कौन है? मोदी जी। As we are from Bengal, we support Didi. हवा चल रहा है बीजेपी का। बांग्लाई शुद्धू दंगा बाजी ओ पिशी जाओ दीदी पसंद है। बंगाल दादा को जाता है। 10 साल में जितना काम हुआ 35 साल में भी इतना काम नहीं हुआ। हमको देखो कोई पसंद, कोई खिलाने देगा, हमको किसी का पसंद नहीं। देना पड़ता है वोट। अभी फिलहाल फाइट जो देख रही है, इसको ये बोल रहे, इसको ये बोल रहे, लेकिन पर्सनल लेवल में तो कोई फाइट है ही नहीं। Till they know better on May 2nd, it's a tightrope walk for the electorate. Echoes in every chant sounded invoking the gods, or mostly one particular god. While we journalists are busy decoding this election, the electorate is a different story. Rhetoric, politics, acute polarization, and in midst of it stands the Bengali voter. Has an opinion. When you ask him or her, they'll always come out and tell you what they think. But it'd be highly unfair of me not to give the sense that I get from the Bengali voter every time I approach him or her. There's a sense of being highly perplexed. If I can say it in Hindi, "Arey kahan phas gaye hain?" Where are we stuck? In midst of these drums beating, the high decibel, high octane campaign, the mudslinging. There's a sense of, can we just get over with it? We've got bigger fish to fry. Well, one thing's for sure, viewers, there is a bit of a sense that the voter is overwhelmed, which you might have just seen there in our report. But good evening, I'm Preeti Chaudhary, and we roll out of Naxalbari. For anyone familiar with Naxalbari would know the iconic spot that I stand off, and we roll our bulletin live. Viewers, this is, who don't know, is a memorial site. It's called the Red Brigade locally. It has some of, the tallest left leaders, but combining with them are leaders from the CPI-ML, the local leaders here who scripted the Naxalbari movement. When I say Naxalbari movement, this was the place, the inception of what we today call Naxalism. There was one uprising which took place here on the 25th of March 1967, the fires of which went across the country, internationally as well. Naxalism has taken many forms, evolved, changed over the years, but this was the very place of inception. Let's now quickly shift focus, because what we've also seen in Naxalbari is influence of saffron, the left turning right. When we talk about the right, this time the BJP's rise in the state of West Bengal, viewers, is not just happened in a day. Yes, it's a party which from 2011 had zero constituencies in that election, won 0 constituencies in that elections. 2016 won just 3, and now is the main challenger. Who's behind it? Many would say the RSS. যদি কালীকে ভালোবাসি, কালীঘাটকেও ভালোবাসি, বাংলাকেও ভালোবাসি, ভারতকেও ভালোবাসি, আমাদের যে কোনো একজনকে ভালোবাসলে হয়। যদি রামকে ভালোবাসি তো ভারতবর্ষকে ভালোবাসি, আমাদের জন্য কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। ওরা সেই জায়গাতে ওরা দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি করে। No, this is not a political rally. No, they are not political leaders. No, this is not an election campaign. This is a voter awareness program organized by the RSS West Bengal. They are RSS leaders. The aim is clear: maximize voting for a certain community. I have no problem in admitting, like you must have seen in the meeting also, we have been saying this openly, in the meeting also must have heard, that a certain section of population, which is 30%, it votes 100% in West Bengal, which we call minorities. Minorities are 30%, but they vote 100%. But the population, which is 70%, they vote 20%, 30%, at the most 50%. So we aim, for a healthy democracy, it is required that the 70% population who is undervoting, they should vote. The RSS in Bengal is credited to have laid the ground on which stands the BJP, laid it for years now, piece by piece, but modest of its contribution. Here at this Sabha in New Barakpur, or what the RSS calls Swachetan Manch, they say the aim is to stimulate voter turnout
not propagate ideology. हमने कोई इस दल को या इस व्यक्ति के पक्ष में मतदान करिए ऐसी वार्ता हमारी नहीं थी। इतना कहना था कि जो समाज के हित में काम करे उसके लिए आप अपना मतदान करिए। सर, परिवर्तन आपकी स्पीच में 15 बार था। जी बिल्कुल, असली परिवर्तन तो अभी आने वाला है। The rise of the right in Bengal and the role of the RSS in it is what books and papers will be written post this election if the BJP wins. For a journalist covering a regional election, the biggest advantage or the disadvantage could be knowing the regional language, not knowing the regional language. Well, for me, it's been a big disadvantage. I don't know about it. But at this RSS meet, this munch of the RSS, it's proven to be quite an advantage. It's given me an insight on this particular meeting, which is taking place across West Bengal. Every day, various stages, munches are being organized. What I really picked up from this were 3 words. Number 1, every second line had the word Hindu in it. Number 2, nearly every 10th line had the word Muslim in it. Number 3, I heard a lot of the word Parivartan. Jai Sri Ram! Jai Jai Sri Ram! Gadiahat is one of the 58,000 shakhas in West Bengal. It's got 3 batches, the very young, the older and the adults. पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 शाखा थे, उसके बाद 40 हुआ, 50 हुआ, बढ़ते जा रहा है और अभी और थोड़ा सा कोशिश करने से 150 शाखा हो जाएगा। जो आंकड़ा है उसमें सारे भारतवर्ष में ही संघ का काम और जो संघ में जुड़ने का जो दृष्टिकोण मतलब जो लोग हैं वो उनका जुड़ने का ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा है। संगम बोलता नहीं है हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हम लोग और जो लाइन है दया हिंदू भूमि में सुखम वरित हम ये हिंदू भूमि में जो है तो ये हिंदू भूमि में हम लोग सुख और शांति से एक साथ रहते हैं, इसमें कोई भेदभाव का बात नहीं है। They join young, fun and games, a bit of discipline and a lot of ideology, all imbibed by some as young as 5 years old. मैं भी वो खेल के आकर्षण से ही ज्वाइन किया हूँ। अभी ये कबड्डी हो रहा था, कबड्डी ऐसा निजुद्ध जो मार्शल आर्ट है उसका भारतीय संस्कर निजुद्ध बोलते हैं, तो उनसे ही मैं प्रेरित होकर तो इधर आया। A shakha meets twice a day, early morning 7 to 8 and then 5 to 6 in the evening. Its proverbial door still shut to women or girls. दादा, लड़कियां कब लेके आएंगे अपनी शाखा में? उनको भी तो खेलने का मन करता है। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन हमारे एक सेविका समिति है तो यहाँ जगह मिल नहीं रहा है, जिसके कारण नहीं तो बहुत हमारे बहन लोग आना चाहते हैं तो सुविधा नहीं होता, क्योंकि वो पूरा जो कंपाउंड तो वो अच्छा चाहिए। Unlike the BJP, which registered its presence only in 2014, the RSS has been active in the state since the days of the Janasangh, but active more in the social and religious realm, rather than the political circles, until 2015, when a full-time RSS pracharak was given the charge. This election, the RSS is key to BJP's organizational strength, to help power the cadre strength, build base. In the aftermath of Cyclone Amphan, the RSS has actively tiny hamlet of Jaydev in Arambagh. Both brothers, Muno and Biswa, regulars with the RSS Shakha for decades, are today attached to the local polling booths to make sure there is maximum voting
for the BJP. आरएसएस का समर्थन करता है। आरएसएस का समर्थन करते हैं। कब से? पहले मैंने बहुत दिन से। कितना दिन? 30 साल है। 30 साल से? 30 साल से ভালো लगता है आरएसएस में काम में जब भी करता है उसको बीजेपी ला ভালো কাজ করবে रास्ता घाट आरो ভালো হবে। ये मुस्लिम जो है देश में दंगा बनाता है, वो बम फटाता है, ये देश लिए हमारा जो हिंदू जो एक होगा तो और ज़्यादा होगा। Those wondering how the BJP that had 0 seats in 2011 state elections and just 3 in 2016 is today giving Mamata Banerjee the fight for her life. I guess we must all remember, Rome wasn't built in a day, was it? Reporting with video journalist Hitesh Kumar, Preeti Chaudhary for India Today. So there you have it, the RSS viewers behind the rise of the right in the state of West Bengal. How much of a difference will it make? We'll only know when that last vote is counted. A quick break to stay with us on the other side. We're going to get you what the young voter, primarily the first-time voter, is thinking this time around. You know, I've never quite seen an election like this. It's electric, both, in good ways and bad. But when you talk to the youth, you know how aware they are on how a tectonic election this is going to be. Listen in. Om Bandhuka Kushma Bhashang Panchamunthadivaashini Surat Chandra Kala Ratna Mukutang Mundamalini Trinetrang Raktavashanang Pinannata Khadasthaning Pustakanchakshamanancha Barancha Bhayakankramat Dadating Shangasmarenitya. The Chandi Path, a religious Hindu text describing the victory of Ma Durga over a demon. The Chandi Path has been invoked many times this election. Moduk Bonditagni Juge Devi Sharbo Saubhagyo Daini. Chandi Path, intrinsic to Bengal. It's Pujo, it's people, and a very proud set of people at that. There is this thing about pride. If it's there, then it runs deep. बंगाल और पंजाब और बाकी सब राष्ट्र भी थे, सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन से हमारा आज का जो बहुत इतना प्यारा हमारा फ्रीडम है वो हम लोग को मिला। लेकिन बंगाल का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम पोर्ट्रे करने को ज़्यादा पसंद करते हैं। बंगाल में हम लोग का बहुत रिच कल्चर है, एज इफ लाइक हम लोग का बहुत सारा फेस्टिवल्स है। सो दूसरा जगह से मतलब हम लोग का जो ये है कल्चर है, सो बहुत अलग है। एक बात फिर तुम सुनो, अभय बधु मुखर्जी को क्या तुम पहचानो? Culture is a word you hear often in Bengal. उस साल का नाम था 1906, काला पानी का। Arithro and his friends, all first-time voters, are rehearsing a play written to celebrate an unknown Bengali freedom fighter. ऐसा भी कोई अगर पार्टी होगा जो खुद को बोलेगा कि नहीं ये मेरा गलती भी है, ये गलती भी मेरा है और ये मैं सुधारूंगा, ऐसा भी अगर कोई पार्टी होगा, ऐसा भी अगर कोई आदमी होगा तो मैं उसको वोट देना चाहूँगा। उसने लगा क्या नया उपाय, अत्याचार जितना भी बढ़े वो युद्ध ना रुकाए। जैसे 10 इयर्स हो गया है तो हमें लगता है कि हमें एक और किसी और को भी चांस देना चाहिए ताकि वो भी बंगाल को उसी तरह संभाले या फिर कुछ अलग आइडियोलॉजी से संभाले। जो जितना अच्छा काम करेगा, जैसे जितना कंट्री डेवलप होगा वही मुझे चाहिए। Not very far from where Arithro and his friends rehearse is another group of... जी पसंद है। क्योंकि पसंद है उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो कल्चरल वो जो फंक्शंस होता है ना, जो बॉलीवुड का आर्टिस्ट को लेकर और जो भी है वो अच्छा से निभाता है, इसलिए पसंद है। इसीलिए पसंद है। मोदी जी को पसंद है। सभी लोग चाहता है कि नहीं मैं इस सीट में आऊँ, ठीक है, सभी लोग चाहता है, ठीक है, पर आके कितना काम कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। मैडम इलेक्शंस जब होती है ना तब हर जगह पे टेंशन रहती है, लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल का एक प्रॉब्लम है कि यहाँ लोग इलेक्शन को लेके बहुत उत्साहित है, ठीक है।
मतलब इतना भी उत्साहित होने का मुझे लगता है ये बहुत गंदा है, ये होना नहीं चाहिए। जो भी हो आप अपना क्रेडेंशियल से जीतो, हम लोग आपको पूरा सम्मान से हम लोग आपको मानेंगे। आप लोग ये करोगे तो अब लोग अगर किसी को साबोटाज करेंगे और या निरपेक्षता को नहीं फॉलो करेंगे तो हम लोगों को दुख होता है, क्योंकि हम लोग भारतीय नागरिक हैं। हम लोगों को बाहर के देशों में जब बोलता है कि तुम भारत से हो, सेकुलर कंट्री से है, तो हम लोगों को बहुत गर्व होता है। জানে আর মনে দাও শীতের শেষের তুষার গলানো উত্তাপ টুকরো টুকরো করে ছেড়ে তোমার ভীরুতার কলঙ্কিত The youth, the first-time voter, wanting a clean election. I'm quite afraid that ship has already sailed. একত্রিত হোক আমাদের সংহতি। All right, viewers, our last report there was from the city of Kolkata, but we've traveled all the way up north. We are in Naxalbari. It's under the Darjeeling district. However, not the hills there. We sign off from there, and we're going to get you what Naxalbari thinks tomorrow. That's going to be our next dispatch. Do stay with us. It's signing off with camera person Hitesh and my producer Ayushi. Preeti Chaudhary signing off from Naxalbari. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.